Hello dear students, welcome back. I am Shweta and today we are going to start our new chapter, that is chapter number 3, Computerized Accounting with GST. What is the full form of GST? Goods and Service Taxes. Now you can see that this GST has been included everywhere. So we are going to study how to do accounting with the help of computer or in the computer, including GST, all the taxes. Okay. So in this chapter we are going to study what now? Accounting part, right? By using computer. It will be very easy for you because you know BK. आपको BK आता है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी जाने वाला है because whatever you are studying in BK that we are going to do practically. Okay, that things we are going to do practically. Okay, this is the accounting chapter. So let's begin. So the first thing we are going to study in accounting chapter is accounting software. So if you want to study accounting in computer, you need some software for doing the accounting work. Okay. So अगर आपको accounting का काम कंप्यूटर में करना है तो आपको क्या लगेगा? आपको सॉफ्टवेयर लगेगा. ओके. तो उस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? जो सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रहता है उसे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. Okay, so whichever software you're installing, that type of software is called as what? Application software. For accounting software, you're going to need some softwares. Okay, there are many software. You might be knowing about Tally. Tally सबको पता है. This is a common accounting software. But nowadays, many new softwares are used for accounting. Like you can say GNU Khata, and even you know that GNU Khata, the related word is there, khatabook.com, like this. When you see in the advertisement में भी आजकल बहुत दिखाते हैं खाता book. Okay, so that is also what? That is also the accounting software. Now, what is the use of using this accounting software? Let us see that. Accounting software is an application software. I told you first only application software क्या होता है कि जिसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं. Okay, application software means जो सॉफ्टवेयर आपको जरूरत है जिस सॉफ्टवेयर का, that software we are installing in our PC or laptop, that is called as what? Application software. So accounting सॉफ्टवेयर भी हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा. कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वो हमको इंस्टॉल करना पड़ता है. So that's why it is called as an application software. It is used to record all the types of accounting transactions, including receipts, payments, sales and purchases, journals, etc. Now see, what is the use of accounting software? First of all, you know that it is an application software. Lekin what is the use of this accounting software? To record all the types of transactions. Day to day, nowadays, all day you are doing the transactions. So whatever the transactions is taking place, you want to keep the record of that transactions. Okay, आपका जो भी transactions हो रहा है, कोई अगर बिजनेस फर्म है या कोई ऑर्गेनाइजेशंस है जिनको हमेशा डेली केस में ओके और डेली बेसिस पे उनको अगर ट्रांजैक्शंस नोट करके रखना है, रिकॉर्ड करके रखना है, फॉर दैट पर्पस दे आर यूजिंग दिस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. ओके, जैसे कि सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ सेल कर रहा है, तो उन्होंने आज कितने प्रोडक्ट सेल किए, कितने उन्होंने नए खरीदे. ओके, ऑल दिस थिंग्स उन लोगों को उसका क्या करना है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखना है. फॉर दैट पर्पस दे नीड द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. सो किन लोगों को जरूरत पड़ता है? जो गुड्स सेल करते हैं या गुड्स बाय करते हैं, उन सब ऑर्गेनाइजेशंस को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का जरूरत लगता है. और आजकल सभी लोग, बहुत कम लोग होंगे, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि उन लोग सॉफ्टवेयर यूज नहीं करेंगे. जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से सब लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का ही यूज करते हैं. इतना ट्रांजैक्शंस होता है डे टू डे लाइफ में कि उनको हर एक जन का रिकॉर्ड बुक में लिख के रखना इजी नहीं है. That's why they need this accounting software. So nowadays each and every organizations they are using this accounting software. ओके, सो गुड्स कितने सेल किए या कितने परचेस किए, इन सब का
रिकॉर्ड रखने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है. ओके, सो नेक्स्ट, वेरियस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल इन मार्केट. मार्केट में आपको तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे अकाउंटिंग के, जैसे कि GNU खाता, GNU कैश, टर्बो कैश, टैली एक्सेट्रा. सो देर आर वेरियस सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं. उसमें से जो भी सॉफ्टवेयर जिस कंपनी को अच्छा लगता है, इजी लगता है, उन लोग वो यूज करते हैं और अपना ट्रांजेक्शंस उसमें रिकॉर्ड करके रखते हैं. ओके, सो वी विल यूज आइदर GNU खाता और वी विल यूज टैली. कौन सा भी हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग उसमें हम लोग पढ़ने वाले कि किस तरह से कंपनी अपना रिकॉर्ड मीन्स रिकॉर्ड का ट्रांजैक्शंस या रिकॉर्ड या फिर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. सो अंडरस्टूड व्हाट इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर? Accounting software is an application software used to record all the types of accounting transactions, including receipts, payments, sales and purchases, journals, etc. Various accounting softwares are available in market such as GNU Khata, GNU Cash, Turbo Cash, Tally, etc. Okay, so let us move further. Golden rules of accounting. Now, you are a BK students. So, you are a commerce student, not BK student. You are a commerce student and you are having BK subject. So, you all are knowing this golden rules of accounting. ओके आपको कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं वो भी पता है और उनके जो रूल्स होते हैं वो भी आप सबको पता है. देन ऑल्सो लेट अस रिवाइज दैट. ओके, सो देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स? यस, देर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. From that, the first one is, or we can say anyone, कौन सा भी first हो सकता है. So the first one, personal account. Personal, from the name itself we can say personal means खुद का. Okay, या किसी organization, जिसका organization है उन्होंने अपना account रखा होगा या फिर किसी institutions में. See, it is related with individuals. Like means your personal account, my personal account, they are all what? Personal account. Organizations means what? Any big companies, they are also having their own account in banks. Okay, company का account रहेगा, that is called as organizations, business firms. Okay, all of them, they are having the accounts in bank, so that is called as what? Personal account. And institution account. Institution means what? किसी कॉलेज का अकाउंट होगा, स्कूल का अकाउंट होगा या फिर किसी स्कूल का सॉरी या फिर किसी इंस्टीट्यूट का अकाउंट, इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशंस अकाउंट. So, what is personal account? ये खुद का related होता है. Okay, means it is related with individual, organizations and institutions account. Example, person's capital account, bank account, etc. Okay, so all this comes under what? Personal account. Now, what are the rules in personal account? आप सबको पता है क्या रूल है personal account के लिए? Yes, debit means what? The receiver. And what is credit? The giver. So what is the rule of personal account? Debit the receiver, credit the giver. All of you know all these things? Yes. Moving further, the next type of account will be real account. Okay, what is real account? Accounts relating to assets of business are called real account. What is accounts relating to assets of business are called as रियल अकाउंट. रियल अकाउंट किसे कहते हैं? जो एसेट्स होते हैं रिलेटिंग टू, जो अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट्स होते हैं उसे कहा जाता है रियल अकाउंट. एसेट्स मीन्स व्हाट? यस, विच कैन बी, विच वी कैन सेल. ओके, जिसको हम लोग बेच सकते हैं बाद में, जब जरूरत होगी तो हम लोग उसको बेच सकते हैं. दैट आर कॉल्ड एज व्हाट? एसेट्स. ओके, सो दैट इज एसेट्स. रियल अकाउंट्स विच आर tangible or intangible in nature. What is the meaning of tangible and intangible in nature? Real accounts which are tangible. Tangible means what? Which we can see and touch. जिसको हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं उसे tangible कहा जाता है. और जिसे intangible means जिसे हम लोग देख नहीं सकते और छू नहीं सकते हैं, we cannot touch it or we cannot see that thing, that type of account is called as what? Intangible. ओके, सो रियल अकाउंट्स विच आर टैंजिबल और इनटैंजिबल नेचर. कैसे भी हो सकते हैं, एसेट कौन सा भी हो सकता है, जैसे कि फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लैंड है, इसको हम लोग फ्यूचर में ये दिस ऑल और व्हाट? दिस आर ऑल द एसेट्स विच वी कैन
which we can sell it for our use. Okay, then they are what tangible type, because we can see that. Okay, then goodwill, trademark, then brand, this all are what, they are also assets. Okay, but these are invisible, means इसको हम लोग देख नहीं सकते. ट्रेडमार्क रहेगा या गुडविल, ब्रांड, all these things we cannot feel it. Okay, means we cannot touch it. Okay, so they are what, they are intangible in nature. Okay, understood what is tangible and intangible and what is real account? Yes, accounts relating to assets of business are called real accounts. जो assets जिसको हम लोग फ्यूचर में किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, रियल अकाउंट्स. एंड रियल अकाउंट्स व्हिच आर व्हाट, tangible or intangible in nature. So what is tangible? Which we can see and touch. And what is intangible? Which we cannot see and we cannot touch it. Okay, so example, furniture, goodwill, trademark, etc. There are many more examples for this. Okay, now what is the rule in real account? Rule क्या होता है real account में? Yes, डेबिट मीन्स व्हाट, कम्स इन, जो अंदर आता है उसे डेबिट कहा जाता है. एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट, जो बाहर जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं. ओके, व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट. देन द लास्ट टाइप ऑफ अकाउंट इज nominal account. Nominal account is related with all expenses, losses and incomes and gains of the business. So what is nominal account? जहाँ पे भी loss होता है, profit होता है, income मिलता है, gain and all these things, उसे कहते हैं हम लोग nominal account. Example, wages, salary, advertisement, interest received, discount. Okay, so all these things are what? This all are what? Nominal account. Okay, then what are the rule of nominal account? Yes, debit means all expenses and losses and credit means all incomes and gains. See, expense, debit means what? All expenses and losses. जितना भी खर्चा किया या नुकसान हुआ, that will be debit. And credit means all incomes and gains. जितना income मिला, जितने profit मिला, they are all the credit. Okay, so that is the rule of nominal account. So mostly you should know the rules of all these accounts. What are the rules of personal account? Debit, the receiver जिसको मिलता है, that is debit, and credit the giver जो देता है. Okay, then in real account rule is what? For debit what comes in, जो अंदर आता है उसे debit कहा जाता है, जो बाहर जाता है उसे credit कहा जाता है. Then in nominal account, debit means what? All the expenses and losses. And credit means all incomes and gains. Okay, so these are all the golden rules of accounting. This all you know, this you have already studied in BK. Okay, now let's move further. Working of accounting software. Now any software whatever you install, तो वो software चलता कैसे है? Okay, how it works? It has 3 parts. See, फर्स्ट इनपुट डेटा मास्टर्स मीन्स हम लोग पहले कंपनी क्रिएट करते हैं, फिर उसमें डेटा डालेंगे, फिर उनका एंट्रीज प्रोसेस करते हैं, फिर आउटपुट आता है. मीन्स जो भी हम लोग ने किया उसका रिजल्ट अगर हमको देखना है, उनकी रिपोर्ट हमको देखना है, तो वो आउटपुट में आएगा. ओके, नाउ व्हाट कम्स अंडर इनपुट डेटा मास्टर्स मीन्स हमको एक बार कंपनी क्रिएट हो गया तो उसके बाद हमको डेटा क्या एंटर करना है, दैट इज व्हाट. सी, this is all things whatever once you create the company, all these things you want to enter in that company. सबसे पहले जब आपका फर्म है, आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, फिर आपको कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा. उसके अंदर आपकी जो भी कंपनी का नाम है, आपका जो भी कंपनी का डेटा है वो पूरा आप फिल करोगे. ओके, फिर एक बार वो फिल हो गया तो उसके अंदर जो भी डेटा एंटर करना है, डेटा एंटर करना मीन्स जैसे लेजर, ग्रुप, वाउचर्स, स्टॉक आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजर, गोडाउन, ये सब थिंग्स आपको इनपुट करने पड़ते हैं. मीन्स ये सब आपको इनपुट करना पड़ता है कंपनी के अंदर. ओके, so what is this ledger, groups, voucher, this all things we will see when you are creating the company. And again I am going to discuss about ledgers and groups also in this lecture only. Okay, so ये सब हमको enter करना पड़ता है. Then
व्हाट इज प्रोसेसिंग एंट्रीज? प्रोसेसिंग एंट्रीज मीन्स एक बार ये सब एंटर हुआ तो ये काम आप कर सकते हो. अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, इनवॉइस, ऑल दिस थिंग्स डिपेंड्स अपॉन दिस ओनली. अगर ये नहीं रहेगा तो ये सब काम नहीं हो सकता है. ओके, सो अकाउंटिंग वाउचर, inventory voucher, invoice, all these things we are going to do in the entry means processing purposes. Okay, एक बार means जैसे यहाँ पे कैसा करोगे आप कि अगर suppose if you are selling any item, then what will come in voucher entry, that we are going to see. Okay, परचेस किया तो परचेस वाउचर एंट्री कैसा करते हैं, अगर सेल किया तो सेल का वाउचर एंट्री कैसा करते हैं, ऑल दैट थिंग्स वी विल सी. ओके, इन प्रैक्टिकल पार्ट. देन लास्टली वंस एवरीथिंग इज क्रिएटेड, आपने कंपनी बनाया, आपने ये सब डेटा एंटर कर दिया, फिर आपने एंट्री प्रोसेसिंग किया. अब लास्ट में अगर आपको रिपोर्ट्स देखने, सो फॉर दैट पर्पस व्हाट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स यू कैन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीन्स कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ वो रहेगा. बैलेंस शीट, देन डे बुक मीन्स हर डेली का डे बुक देख सकते हो कि आज कितना खर्चा हुआ कितना एंट्रीज हुआ, दैट ऑल थिंग्स यू कैन सी इन द डे बुक. ओके, देन ट्रायल बैलेंस, जीएसटी समरी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस समरी भी मिलेगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. Accounting software, how it works, this is divided into 3 parts. First, input data master, लेकिन सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करना पड़ता है. ओके, वंस यू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका, आपको सबसे पहले कंपनी क्रिएट करना पड़ता है. Then you want to input data in that, like you can enter ledgers, you can do group, then voucher entries, stock items, unit of measures, godowns, all these things are input data items. Then you want to process the entry, accounting voucher, inventory voucher, invoice. Output reports are profit and loss account, balance sheet, day book, trial balance, GST summary. Okay, so all these things comes under the working of accounting software, how it works. This all things we will see how we are going to do it practically. Okay, then let us move further. Now we will see the summary of balance sheet groups. See here you can see there are lots of groups. Okay, total there will be 29 groups including primary and subgroups. So these are the primary groups, group name, subgroup name and ledger account. सो यहाँ पे जो लिखा रहेगा ये जितने भी ग्रुप्स हम लोग देखेंगे ये टोटल आपको ये जो ग्रुप नेम से ये सारे प्राइमरी है. ओके, एंड यहाँ पे जो भी ग्रुप नेम आने वाले वो सब ग्रुप्स है. ओके, सो प्राइमरी ग्रुप आपको कितने मिलेंगे, आपको प्राइमरी ग्रुप मिलने वाले हैं 13. हाउ मेनी? 13, 1 3. एंड सब ग्रुप आपको मिलने वाले हैं 16. सब ग्रुप्स कितने रहने वाले हैं? 16. प्राइमरी ग्रुप्स कितने हैं? 13, 1 3. एंड सब ग्रुप्स कितने रहेंगे? 16. जब हम पढ़ेंगे तो लास्ट में देखेंगे कि कितने टोटल आ रहे हैं. ओके, सो टोटल ग्रुप्स कितने आएंगे आपको? टोटल इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सब ग्रुप्स, टोटल ग्रुप विल बी हाउ मेनी? टोटल विल बी 29. ओके, नाउ see this group and subgroups, they are already built in your accounting software. जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो उसमें आपको ग्रुप और सब ग्रुप ऑलरेडी दिखेगा. ओके, ऑलरेडी वो बनाया हुआ रहता है जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं. ओके, सो ग्रुप एंड सब ग्रुप्स ये ऑलरेडी रहता है, इसको हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं. याद रखना, ग्रुप एंड सब ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए रहते हैं आपके सॉफ्टवेयर में, इसको हम लोग डिलीट नहीं कर सकते, इसको हम लोग को यूज करना पड़ता है. ओके, नाउ लेजर अकाउंट. व्हाट इज दिस लेजर अकाउंट? मीन्स किस तरह का अकाउंट कौन से ग्रुप के अंदर आता है वो दिया है. ओके, कौन से टाइप का अकाउंट कौन से ग्रुप में आता है, दिस इज मेंशन्ड ओवर हियर. फॉर एग्जांपल जब हम कंपनी क्रिएट करेंगे, आपको कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, सो दैट टाइम यू शुड कम टू नो कि ये कौन सा लेजर है. ओके, ये कौन से टाइप का लेजर है और ये किस ग्रुप के अंदर आएगा. ओके, सो दिस आर द जस्ट एग्जाम्पल्स कि किस तरह के अकाउंट आपको किस ग्रुप में डालने हैं. ओके, जैसे अगर आपको क्वेश्चन है कि राम हैज स्टार्टेड कंपनी विद द कैपिटल अकाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज. ओके, अगर ऐसा आया तो कैपिटल अकाउंट क्या आया? कैपिटल अकाउंट राम का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें आप क्या लिखोगे? कैपिटल अकाउंट विल बी देयर अंडर विच अकाउंट, विच ग्रुप? अंडर कैपिटल ग्रुप. ओके, कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल ग्रुप और कितने रुपीज? 2 लाख. ओके, इस तरह से
सपोज अगर मैंने बोला फर्नीचर, ओके, सपोज फर्नीचर, राम ब्रॉट फर्नीचर फॉर ₹9,000, ओके, राम ब्रॉट फर्नीचर फॉर ₹9,000. सो फर्नीचर किस में आएगा, फर्नीचर अकाउंट किसके अंदर आने वाला है, फिक्स्ड एसेट, ओके, लाइक दिस. इस तरह से आपको क्वेश्चन देख के आपको आना चाहिए कि ये लेजर किस ग्रुप के अंदर आने वाला है. ओके, सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि ये अकाउंट रहेगा, ये अगर ऐसा नाम आ रहा है आपके क्वेश्चन में तो ये किस अंदर, किसके ग्रुप के अंदर आने वाला है, किस ग्रुप के अंदर या फिर किस सब ग्रुप के अंदर आने वाला है. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. हम लोग जस्ट देखेंगे यहाँ पे यो वी आर गोइंग टू स्टडी द ग्रुप नेम एंड लेजर अकाउंट. जस्ट वी विल गो थ्रू इट एंड व्हेन द क्वेश्चन कम्स दैट टाइम इट विल बी वेरी क्लियर टू यू. जब हम एक्चुअली प्रैक्टिकल करेंगे और पढ़ेंगे तब क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा कि हाँ इसको लेक्चर कहा जाता है और इसको ग्रुप कहा जाता है. क्रिएट करते समय आपको वो आइडिया क्लियर हो जाएगा. सो डोंट गेट कंफ्यूज. सिर्फ आपको ये समरी जो चार्ट है ये आपको याद रखना है. ओके, अगर एग्जाम में आया, बोर्ड एग्जाम्स में मोस्टली कैसे पूछेंगे, सपोज उन्होंने दिया रहेगा लैंड. सो लैंड मीन्स व्हाट, दिस कम्स अंडर विच टाइप ऑफ ग्रुप, ग्रुप कौन से टाइप के ग्रुप में आएगा. तो लैंड आप सबको पता है कि ये एसेट है, तो लेकिन किस तरह का एसेट है, करंट एसेट है या फिक्स्ड एसेट है, इट इज अ फिक्स्ड एसेट. तो आपको फटक से आना चाहिए कि यस लैंड आया है तो ये कौन सा एसेट है, फिक्स्ड एसेट. ओके, उसी तरह से अगर उन्होंने कैपिटल फंड बोला तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल फंड कौन से ग्रुप के अंदर आता है, कैपिटल. मोस्टली इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, मींस दिस किसी लेजर का नाम दे देंगे और आपको पूछेंगे नाउ टेल मी द ग्रुप ऑफ दिस, ये कौन से ग्रुप के अंदर आएगा. सो दैट टाइम यू शुड नो कि ये कौन से ग्रुप के अंदर आ सकता है. ओके, सो यू हैव टू जस्ट बाय हार्ट दिस चार्ट. यू शुड go through this and you should come to know, it should be very clear to you कि ये कौन से ग्रुप के अंदर आने वाला है लेक्चर. Okay, so see here the first group name is capital which is also called as corpus. पहले ग्रुप का नाम क्या है, कैपिटल है, जिसे हम लोग कॉर्पस भी कहते हैं. इसका कोई सब ग्रुप नहीं है, so here none it is written, so no sub group is there of capital. Now in capital what type of ledger accounts you can see, like capital account, partners capital account, शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल फंड. ऐसे अगर आपको नाम दिखे तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो लेजर्स है ये कौन से ग्रुप के अंदर आने वाला है, कैपिटल ग्रुप के अंदर. ओके, देन नेक्स्ट करंट एसेट्स. नाउ इन करंट एसेट्स देयर आर 5 सब ग्रुप्स. करंट एसेट के अंदर कितने सब ग्रुप्स है, 5 सब ग्रुप्स. कैश एज बैंक, कैश इन हैंड, इन्वेंट्री, लोन्स एंड एडवांस, sundry debtors. See by heart this also, means in this group which subgroups are present. ये भी एग्जाम में आ सकता है कि करंट एसेट के अंदर या फिर किसी फिल इन द ब्लैंक्स में दिया जाएगा कैश इन हैंड डैश सब ग्रुप कम्स अंडर करंट एसेट, ऐसा आएगा. सपोज डैश सब ग्रुप कम्स अंडर करंट एसेट और उन्होंने ये सब ऑप्शंस दिए हैं और एक कैश इन हैंड दिया है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा, कैश इन हैंड. या फिर कैश इन हैंड कम्स अंडर डैश ग्रुप, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट. सो व्हाट इज आंसर, कैश इन हैंड या इन्वेंट्री, लोन्स एंड एडवांस कौन से इसमें आने वाला है, करंट एसेट्स. ओके, सो यू शुड बाय हार्ट द ग्रुप विथ सब ग्रुप्स. करंट एसेट के अंदर कितने सब ग्रुप्स है, 5 सब ग्रुप्स. विच आर दे, कैश एज बैंक, कैश इन हैंड, inventory, loans and advance, sundry debtors. Okay, so all this comes under subgroups. All these are the subgroups of current asset. Now what type of accounts will be coming in this, कौन से टाइप के अकाउंट आपको समझ में आना चाहिए कि ये इसके अंदर आने चाहिए. सी बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट. सो बैंक अकाउंट आया तो आपको समझ में आता है कि ये बैंक के अंदर जाना है. उसी तरह से कैश अकाउंट किसमें जाएगा, कैश इन हैंड. देन PT cash account, closing, see PT cash account, closing stock, that is a system generated closing stock. ये तो आपको सब पता है, stock close हो रहा है, stock begin हो रहा है. So stock at the beginning, that is system generated ledger account. Short term loans and advances given to employees, prepaid expenses, then all debtors और कस्टमर्स अकाउंट. डेटर्स कह सकते हैं या फिर कस्टमर्स अकाउंट, जितने भी कस्टमर्स के अकाउंट है दे आर ऑल्सो गोइंग टू कम इन दिस. ओके, सो ऑल दिस टाइप ऑफ लेजर अकाउंट्स दे कम अंडर करंट एसेट्स. ये सारे जो अकाउंट्स है ये किसके अंदर आते हैं, करंट एसेट्स के अंदर. ओके, सो you should know this, bank account, cash account, PT cash account, closing stock, stock at the beginning, short term loans and advances given to the employees,
prepaid expenses, all debtors, that is customers account. Okay, all this comes under group current asset, and subgroups depending upon the name you can say that this comes. Okay, जैसे कि loans and advances, it will come under what? Loans and advances. Then all debtors or customers account, this will come under sundry debtors. Okay, now next one is current liability. Current liability, this is a group, primary group, and the subgroup is, there are three subgroups in current liability. Current liability में कितने subgroups है? Three. Which are they? Provisions, sundry creditors for expenses, sundry creditors for purchases. Okay, sundry creditors for expenses and for purchases. Then which type of account is going to come under this group? Current liability के अंदर कौन से टाइप के अकाउंट आ सकते हैं? अकाउंट ऑफ पीएफ, जो पीएफ का अकाउंट होता है ना, दैट, देन ईएसआई, टीडीएस, ड्यूज एक्सेट्रा. Provision for bad dates, debits or dates you can say. Then provision for income tax, outstanding expenses, all suppliers, that is creditors account. Okay, so all this accounts comes under what? Which group? Under current liability. Then fixed assets. Fixed assets, इसके अंदर आपको कितने सब ग्रुप्स मिलने वाले हैं? 4 सब ग्रुप्स. फिक्स्ड एसेट के अंदर कितने सब ग्रुप्स है? 4 सब ग्रुप्स. बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी. ओके, बिल्डिंग, furniture, land, plant and machinery. In building, which type of accounts will come under building subgroup? Building account, office building account, फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट. सो जहां पे भी बिल्डिंग का नाम दिखेगा वो कौन से सब ग्रुप के अंदर आने वाला है? बिल्डिंग. और मेन ग्रुप कौन सा रहेगा? फिक्स्ड एसेट. देन मोस्टली दे आर आस्किंग द मेन प्राइमरी ग्रुप. एग्जाम में ज्यादातर प्राइमरी ग्रुप पूछते हैं, सब ग्रुप नहीं पूछते. ओके, सो मोस्टली दे आर आस्किंग प्राइमरी ग्रुप ओनली. Then furniture account, shop furniture account will also come under furniture. Land account, land. Machinery account, you know from the name itself. Plant account, plant and machinery account. So such type of accounts we can create, or such type of ledgers will come under fixed asset. Okay, so this you have to by heart it. Okay, then या फिर नाम से ही पता चलना चाहिए आपको. Okay, it is easy, so you will come to know very easily. So यहाँ तक हम लोगों ने कितने सब ग्रुप्स पढ़े? 12 सब ग्रुप्स. और कितने ग्रुप नेम्स पढ़े हैं? प्राइमरी ग्रुप्स कितने? 4. Now moving further, we will see the rest of the primary groups and the subgroups. See now, next type of group, primary group is investment. Fifth one is investment. See, serial doesn't matter over here. You have to just know that which group names, which is the primary group and which is the subgroup. So the primary group कौन सा है अभी? Investment. Investment के अंदर कितने subgroup है? 2 subgroups है. Investment in bank deposit, investment in shares and debentures. So investment के कितने subgroups है? 2. Investment in bank deposit, investment in shares and debentures. So which type of account comes under this? Bank fixed deposit, investment in shares, investment in debentures. So किस तरह के अकाउंट आते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर? बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, देन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स. ओके, देन मूविंग फर्दर, लोन्स. लोन्स ये एसेट है, ये लोन्स लाइबिलिटी है. ओके, सो लोन एसेट में देयर इज नो सब ग्रुप, बट इन लोन लाइबिलिटी यू आर हैविंग 2 सब ग्रुप्स. लोन्स एसेट में सब ग्रुप नहीं है, लेकिन लोन्स लाइबिलिटी में 2 सब ग्रुप है, सेक्योर्ड एंड अनसेक्योर्ड. Then which type of account comes under loans asset? Accounts of all the long term loans given by the organization. जो भी long term loans organization देता है वो सारे account loan assets में आते हैं. लोन लाइबिलिटी के अंदर किस तरह के अकाउंट आते हैं? बैंक लोन, जो भी लोन हम लोग बैंक से उठाते हैं, अदर सेक्योर्ड लोन्स, लोन्स फ्रॉम पार्टनर्स, लोन फ्रॉम मैनेजर्स एक्सेट्रा. जो भी लोन हम लोग बैंक से लेते हैं या किसी अपने पार्टनर से लेते हैं या फिर मैनेजर से लेते हैं, that all comes under what? Loan liability. And all the other secured loans will also come under the liability, loans liability. Okay, then next one, miscellaneous expenses, that is assets. Miscellaneous expenses, or we can also call it as what? Assets. Here there is no subgroup. Here
which type of account is going to come in miscellaneous expenses? Preliminary expenses. Okay, preliminary expenses, pre-operational expenses, etc. This all will come under miscellaneous expenses. Then reserves. Here also there is no subgroup. Retained earnings, general reserves, reserves and surplus. All this comes under reserves. Okay, so reserves के अंदर subgroup नहीं आता है और retained earnings, general reserves, reserves and surplus, this all type of accounts is going to come in reserves. Now see, here we have studied 9 primary groups and how many subgroups are there? Last one is 16. Okay, हम लोग ने कितना प्राइमरी ग्रुप्स पढ़े? कितने प्राइमरी ग्रुप्स है यहाँ पे? 9 प्राइमरी ग्रुप्स और 16 सब ग्रुप्स पढ़े हैं। और ये जो हम लोग ने अभी तक पढ़ा, इसके पहले का और ये वाला, ये सब है समरी ऑफ बैलेंस शीट। ये सारे ग्रुप्स बैलेंस शीट के लिए आने वाले हैं 9 तक। ओके, सो जिसे इन्वेस्टमेंट, लोन, लोन्स, एसेट, लोन लायबिलिटी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, रिजर्व्स, और इसके पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था? कैपिटल। देन हम लोग ने क्या पढ़ा? करंट एसेट, current fixed asset, then what we have studied? Current asset, fixed asset, current liabilities, right? So वहां पे हम लोग ने 4 पढ़े थे और ये 9। तो वो सारे, ये सारे मिला के ये सारे किसके हैं? दिस इज द समरी ऑफ बैलेंस शीट। ये सब बैलेंस शीट के अंदर आता है। ओके, ये सब हम लोग बैलेंस शीट में देख सकते हैं। दैट this all groups and learn this type of accounts. Okay, now we are going to see the summary of what? Profit and loss accounts. This was the summary of what? यहाँ पे हम लोग ने 9 प्राइमरी ग्रुप्स पढ़े और 16 सब ग्रुप्स तो यहाँ पे फिनिश हो रहे। मीन्स अभी सब ग्रुप्स आएंगे क्या? नहीं, अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के जो सब ग्रुप्स होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। लेकिन 9 तक यहाँ पे फिनिश हो रहा है। 9 के बाद जो ग्रुप्स चालू होंगे, टोटल मैंने कितने प्राइमरी ग्रुप्स कहा था आपको? 13 और सब ग्रुप 16। तो 16 सब ग्रुप्स यहाँ पे ही फिनिश हो रहे हैं। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कोई भी सब ग्रुप नहीं रहने वाला है। ओके, सिर्फ प्राइमरी ग्रुप्स रहने वाले हैं। ओके, 9 के बाद का जो प्राइमरी ग्रुप है वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के लिए पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव फर्दर। Summary of profit and loss groups. CEO. This is a direct income. This is a primary group. Summary of balance sheet हम लोग ने पढ़ा था। बैलेंस शीट में हम लोग ने 9 प्राइमरी ग्रुप पढ़े थे। 10th प्राइमरी ग्रुप है डायरेक्ट इनकम। यहाँ पे हम लोग ने 1 से शुरू किया है, लेकिन अगर आपको टोटल प्राइमरी ग्रुप्स देखने हैं तो 10th है डायरेक्ट इनकम। सब ग्रुप कुछ भी नहीं आएगा। ऑलरेडी 16 सब ग्रुप्स हम लोग ने प्रॉफिट बैलेंस शीट के अंदर देख लिए हैं। ओके, नाउ देयर विल बी नो सब ग्रुप्स इन प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ which type of accounts comes under direct income? Sales, professional fees, profit and loss account or income and expenditure account, system generated ledger account. Then indirect income, यहाँ पे भी सब ग्रुप नहीं है। Which type of account is going to come under indirect income? Bad debit received, commission received, discount received, income from investment, rent received, interest received, etc. So all this type of accounts is going to come in indirect income. जो indirectly पैसा मिलता है वो indirect income में आता है, जो direct मिलता है वो direct income में आता है। Okay, so moving further, this is 10th primary group and this is 11th primary group. Now let's see the another primary groups. See, this is 13th, not 13th, sorry, 10, 11 we have studied there. This is the 12th one. Okay, 12th is direct expense. This is a 12th primary group, that is a direct expense. Subgroup नहीं है. Then which type of direct expense means? Direct पैसा मिलता है काम करने के बाद, उसे कहते हैं direct expenses. वेजेस कैरीज इनवर्ड। ओके, मीन्स जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो भी मजदूर होते हैं जिनको डेली वेजेस के बेसिस पे पैसा मिलता है, दे सो दैट टाइप ऑफ मनी, दैट टाइप ऑफ अकाउंट कम्स अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, डायरेक्टली उनको पैसा मिल जाता है, जितना काम करेंगे उसका पैसा उन लोग को उसी दिन मिल जाता है, इसलिए इसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। कोल, गैस एंड वाटर ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, लाइटनिंग पावर एक्सेट्रा, फ्रेट, import duty, octroi, factory expenses, opening stock account, purchases, sales return, etc.
All this comes under direct expense. Okay, then indirect expense. This is the last primary group, that is the 13th primary group, indirect expense. Subgroup is not there. Then which type of account is going to come under indirect expense? Office expenses, salary, rent account, insurance, audit fee, electricity, depreciation, bad debt, telephone charge, commission allowed, discount allowed, export duty, interest on loan, legal expenses, postage and telegram, printing and stationery, etc. All this comes under indirect expenses. See, you have to by heart this all ledger accounts. ओके क्योंकि एग्जाम में उन लोग कौन सा भी नाम देके पूछ सकते हैं ये किस ग्रुप के अंदर आएगा. ओके ये अकाउंट किस ग्रुप के अंदर आएगा और आपको ग्रुप के नाम दिए रहेंगे. ओके सो यू हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम दैट. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट यू हैव टू राइट द आंसर. ओके जैसे कि अगर उन्होंने टेलीफोन चार्ज पूछ लिया और आपको दिया है टेलीफोन चार्ज कम्स अंडर विच ग्रुप. सो टेलीफोन चार्ज या फिर टेलीफोन चार्ज अकाउंट किस ग्रुप के अंदर आएगा और उन्होंने आंसर में दिया रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, ऐसे ऑप्शंस दिए रहेंगे. सो यू शुड नो कि टेलीफोन किसके अंदर आना चाहिए. ओके सो मोस्टली ऑल दिस चार्ट यू हैव टू बाय हार्ट इट. Okay, now see, here we have completed what? We have completed all the 13 primary groups and 16 subgroups. कितने primary groups पढ़े हम लोगों ने? 13 primary groups. दोनों मिला के बोल रही हूँ. Summary of balance sheet देखा हम लोगों ने, summary of प्रॉफिट एंड लॉस देखा. सो टोटल हम लोगों ने कितने ग्रुप्स पढ़े हैं? 13 ग्रुप्स पढ़े हैं और 16 सब ग्रुप्स. ओके सो यू शुड नो फॉर दिस ऑल्सो कि कौन सा ग्रुप किसके अंडर आता है, कौन सा सब ग्रुप किस प्राइमरी ग्रुप के अंदर आता है. दैट ऑल्सो यू शुड नो. एंड प्लस यू शुड नो व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स इज गोइंग टू कम अंडर विच ग्रुप. ओके मोस्टली उन लोग एग्जाम में कभी भी इसका सब ग्रुप नहीं पूछते, उन लोग डायरेक्टली मेन ग्रुप ही पूछते हैं, प्राइमरी ग्रुप ही पूछते हैं. Okay, so this is all about the chart. When we will see the question, from that idea will be clear to you. आपको तभी समझेगा कि ledger account और group name क्या होता है. जब हम कंपनी क्रिएट करेंगे that time I will show you कि जो मैं ledger की बात कर रहे थे वो कौन सा है और ग्रुप क्या होता है. ग्रुप नेम एंड सब ग्रुप ये ऑलरेडी आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होता है. ओके ये लेजर अकाउंट आपको बनाना पड़ता है. लेजर अकाउंट इज नॉट देयर इन योर सॉफ्टवेयर. दिस लेजर अकाउंट्स यू वांट टू क्रिएट. ओके डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी के इसके ऊपर डिपेंड रहता है. या फिर हम लोग क्वेश्चन करने वाले तो हम लोग क्वेश्चंस को देख के करेंगे. कंपनी का ऊपर जो क्वेश्चन दिया रहेगा, depending upon that question we are going to see which type of ledger is going to come under which group. लेकिन ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप और सब ग्रुप ऑलरेडी आपके अकाउंटिंग में रहता है. आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया रहेगा और बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन यू शुड कम टू नो दैट विच टाइप ऑफ अकाउंट विल बी कमिंग अंडर विच टाइप ऑफ ग्रुप. ओके दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप्स and ledgers. Now let's move further and see what is group and what is ledger. So we have seen about groups and ledgers. Okay, now what do you mean by group and ledgers? मैंने अभी आपको group बताया और ledgers भी बताया. So for now we will see what is group. What is group? Group is a type of account. आपने देखा कि group क्या होता है, एक तरह से वो account का type ही है. Okay, it is a type of a account. Groups are helpful for identifying and classifying head and also to get summarized information. What is the groups? Groups are helpful for identifying. आपको पता चलता है उससे. ओके ग्रुप से हम लोग को पता चलता है कि ये कौन से किस तरह का अकाउंट है. ओके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप क्लासीफाई भी कर सकते हो अकाउंट को. अकाउंट हेड एंड ऑल्सो टू गेट समराइज्ड इंफॉर्मेशन, और आपको समराइज्ड इंफॉर्मेशन भी मिल सकता है. ओके जैसे कि आपको करंट एसेट, आपका अगर ग्रुप का नाम करंट एसेट है तो आपको नाम से पता चलता है कि एसेट है ये और इसमें किस तरह के सब ग्रुप्स आने वाले हैं और किस तरह का अकाउंट इसमें आने वाला है. ओके देन ग्रुप ऑफ अकाउंट इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द लार्ज नंबर ऑफ लेजर अकाउंट्स इनटू सीक्वेंशियल अरेंजमेंट. ओके बहुत सारे अगर लेजर्स है और वो लेजर अकाउंट्स आपको अरेंज करें तो आप वो हर एक ग्रुप के अंदर उसको किस तरह से अरेंज करना है सीक्वेंशियल मैनर में, वो हम लोग ग्रुप्स में देखते हैं. ओके सो ग्रुप ऑफ अकाउंट इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द लार्ज नंबर ऑफ लेजर अकाउंट्स.
बहुत सारे लेजर अकाउंट्स रहते हैं, उसको हम लोग को किस ग्रुप के अंदर उनको एडजस्ट करना है, किस ग्रुप के अंदर डालना है, या फिर किस अकाउंट के अंदर डालना है, किस ग्रुप ऑफ अकाउंट के अंदर डालना है, वो हमको करना पड़ता है। ओके, सो हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ग्रुप क्या होता है, ये एक तरह से ये अकाउंट ही है। ओके, ग्रुप इज व्हाट, इट इज अ टाइप ऑफ अकाउंट, कि कौन से टाइप का अकाउंट है ये, कैपिटल अकाउंट है कि करंट एसेट है, करंट फिक्स्ड एसेट है, करंट लायबिलिटी है, डायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, ये सारे ग्रुप के नाम है। ओके, सो ये एक तरह का क्या होता है, अकाउंट ही होता है। और जो भी लेक्चर हम लोग बना रहे हैं वो लेक्चर किस टाइप के अकाउंट के अंदर आने वाला है वो हमको यहाँ पे करना पड़ता है। ओके, सो इट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हम लोग ग्रुप का यूज क्यों करते हैं, कि हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग ये जो लेक्चर्स है बहुत सारे, इनको किस तरह से ऑर्गेनाइज करें, किस तरह से रखना चाहिए, किस ग्रुप के अंदर ये आने चाहिए, ये हमको पता चलता है। ओके, देर आर इन ऑल 29 ग्रुप्स। हम लोग ने देखा कितने ग्रुप्स है, टोटल 29, 13 प्राइमरी ग्रुप्स है एंड 16 सब ग्रुप्स। हाउ मेनी प्राइमरी ग्रुप्स आर देयर, 13 प्राइमरी ग्रुप्स एंड 16 सब ग्रुप्स। ये आपको अलग से लिख के देखना पड़ेगा कि 13 प्राइमरी ग्रुप्स तो मैंने आपको दिखाया बराबर से। ओके, देन 16 सब ग्रुप्स भी आपने समरी ऑफ बैलेंस शीट देखा, तो उसके अंदर हम लोग ने पूरे 16 सब ग्रुप्स भी देखे हैं। ओके, देन this is all about the group. So what is group? Group is nothing but it is one type of a account only. Okay, then it is also used for identifying and classifying the account head to get summarized information. So what is the use of groups? ये किसके लिए होता है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरह का अकाउंट है, इसको हम लोग क्लासीफाई भी कर सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ओके, फॉर गिविंग व्हाट, समराइज्ड इंफॉर्मेशन। देन आपके लेजर्स में अगर बहुत सारे अकाउंट्स हैं तो उसको किस तरह से हम लोग किस ग्रुप में उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं, दैट इज द यूज ऑफ ग्रुप्स। देन व्हाट इज लेजर्स? A ledger account contains record of all transactions relating to assets, liability, capital, and an item of any expenditure or revenue. It has to be created under any of this group. Now you all know कि ledger account means what? It is nothing but what? It contains record of all the transactions. जो भी transactions हो रहा है, okay? Ledgers means what? जैसे हम लोगों ने बोला कि आज कंपनी में this product has been sold or this product has been purchased, या फिर discount has been given by the company on this product or commission has been received. So all these things, ये सब transactions जो कंपनी में होते हैं उसे कहते हैं ledgers, और उसको हम लोग किसी ग्रुप के अंदर डालते हैं। Okay, that is nothing but ledger is an account only and this ledger will be containing what? जो भी transactions हो रहा है record के अंदर, जो भी transactions हम लोग record कर रहे हैं वो लिखेंगे हम लोग ledgers के अंदर। ओके, relating to assets means assets भी हो सकता है, liability भी हो सकता है, capital भी हो सकता है, expenditure हो सकता है, revenue हो सकता है, then bank हो सकता है, फिर then what we have studied, डायरेक्ट इनकम भी हो सकता है, इनडायरेक्ट इनकम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, जैसे कि अगर हम लोग ने कहा कि capital amount of 2 lakhs has been received or has been invested in company, तो हम लोग क्या करेंगे, चलो कैपिटल अकाउंट आ रहा है कंपनी के अंदर इतने लाख का, तो ये कैपिटल अकाउंट एक लेजर हो गया, और ये कैपिटल अकाउंट किस ग्रुप के अंदर जाएगा, कैपिटल के अंदर। ओके, सो दैट इज ग्रुप, लेजर भी बनाया और कैपिटल भी, तो ये ट्रांजैक्शन हुआ। या फिर हम लोग ने बोला कि गुड्स हैज बीन, लाइक मीन्स सपोज वुड हैज बीन सोल्ड। ओके, दिस कंपनी अगर किसी वुड का फर्म है तो उसने इतना वुड सोल्ड किया, सॉरी नॉट सोल्ड किया। Okay, so if they are selling the wood, then that transaction will be written in what? That ledger, selling of wood. This is a ledger and this will be written in ledger account, and what will be the group of this? It comes under the sales account. Okay, so ये payment में आएगा, purchase में आएगा, all these things. So that will be the group thing. So this is a ledger. A ledger account contains record of all the transactions. जो भी transactions आपकी कंपनी में होता है उसके बारे में आप लिखते हो, उसका अकाउंट आप रखते हो, रिकॉर्ड रखते हो, उसे कहते हैं लेजर।
Okay, so that ledger can be anything. That can be asset, that can be liability, it can be capital, it can be income, indirect income, indirect expenses, direct expenses, कुछ भी हो सकता है. Okay, so this is all about what you can say. This is all about the group and ledger. So understood what is group and what is ledger? ओके अगर नहीं भी समझा रहेगा तो आपको आइडिया कब क्लियर होगा? जब आप प्रैक्टिकल करोगे. ओके व्हेन यू विल सी द प्रैक्टिकल हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस, देन यू विल कम टू नो व्हाट इज ग्रुप and what is ledger. Okay, so this is all for today. In the next lecture we will see how to create, means how the process of accounting software takes place. Okay, और how it processes. accounting software किस तरह से काम करता है, पहले हमको क्या करना पड़ता है, फिर हमें क्या करना पड़ता है, all that things we are going to see in the next lecture. So this is all for today. Thank you for watching this video. See you in the next lecture. Till then, take care, be safe and happy learning.